Hello student, hope your preparation is running well. So again welcome back to my channel. Today we will discuss the CPET question of 2022. Before starting the session, kindly like, share and subscribe my channel for getting new notification. Let's start. First question is based on your epithelial tissue. The question is, epithelial tissue are always found immediately adjacent to the connective tissue because they तमें समस्ते जानिछ कि epithelial tissue को कौन कहा जाए ना ताको हमर कवरिंग टिश्यू बोली भी कहा जाए एंड तार अरेंजमेंट केमतिया थाए ना जेमती टाइल्स रो अरेंजमेंट हेई थाए गोटे फ्लोर रे बा तार अरेंजमेंट सेमतिया हेई थाए सेत लगी ताको भी कौन कहा जाए ना पैवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाए। आउ एटा भी जानिछ कि एपिथेलियल टिश्यू रे ब्लड वेसल न थाए। आउ कनेक्टिव टिश्यू कौन कंटेन करछि ना बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू तुमर थ्री टाइप्स रो बोन कार्टिलेज एंड ब्लड। तो ब्लड जेहेतु रहउछि ब्लड भितर ब्लड वेसल रहउछि सो फर्स्ट ऑप्शन टा ठीक अछि दैट इज लैक ऑफ ब्लड वेसल काहे कि ना से तार ब्लड कनेक्शन टा तार ब्लड सी कोठू पाउछि ब्लड एक्सचेंज बा ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड ता धरे होछि केमतिया ना थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। ओके नेक्स्ट आसुछि नेक्स्ट आंसर देछि कोन दैट कैन मेक एक्सचेंज विथ ब्लड क्राइटेरिया फॉर देयर सर्वाइवल एंड फंक्शन जोटा को कि मु कहली कि ता भितरे ब्लड फ्लो किए कराए ना कनेक्टिव टिश्यू कराए। थर्ड ऑप्शन देछि कोन दे हैव नो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एटा भूल काहे कि ना ईसीएम रहउछि कोथिरे ना तुमर एपिथेलियल टिश्यू रे रहउछि। ताले फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ठीक अछि से ऑप्शन डी रे देछि ए एंड बी ताले ऑप्शन डी होछि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 पचारछि ए सीरीज ऑफ फंक्शनल चेंजेस दैट कॉज ए स्पर्म सेल to beat more vigorously and prepare its plasma membrane to fuse with oocytes of plasma membrane is called as। ताहले जितेबाला फ्यूजन हुए तुमर स्पर्म रो हेड सहित आउ तुमर oocyte रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित से टाइम रे कौन हुए ना स्पर्म रो टेल पोर्शन रो vigorously मूवमेंट हुए से मूवमेंटा कौन करे ना तुमर स्पर्म रो हेड एरिया बा तार जो एक्रोजोमल एरिया को बेसी एक्टिव कराए oocyte रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित अटैच बा फ्यूज हेबा पइका से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना कैपेसिटेशन बोली कहा जाए। आ मन रखिबो कैपेसिटेशन इट ऑकर्स इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड ये कौन करे ना लीड्स करे काहा को ना तुमरा एक्रोजोमल रिएक्शन को। ओके देन आउ तीनटा ऑप्शन ने कौन देछि ना फर्टिलाइजेशन सब जानिचो इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। देन इम्प्लांटेशन कौन ना इट इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूटेरस रो आसी के ब्लास्टोसिस्ट रो अटैचमेंट होबा को तुमरा इम्प्लांटेशन भी कहा जाए। देन सिनगामी इट इज अगेन द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। ओके आउ गोटे मन रखिबो एनिमल रे एम्फीमिक्सिस गोटे रहिछि एम्फीमिक्सिस होछि इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई विथ द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई यदि प्रोन्यूक्लियाई रहिथिबो ताहले एम्फीमिक्सिस ताको कहा जाए। ओके जिबा क्वेश्चन नंबर 3 को। एट गैप जंक्शन नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इज नोन एज लास्ट क्लास रे भी आमे जंक्शन ऊपर डिस्कशन करथिले जंक्शनल प्रोटीन विषय रे डिस्कशन करथिले एठी हमको पर्टिकुलरली देई देछि कि गैप जंक्शन रो प्रोटीन को कौन कहा जाए। गैप जंक्शन रो प्रोटीन को हमर कनेक्सिन बोली कहा जाए। ताले करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए।
कनेक्शन कौन करे ना सी गोटे पोर क्रिएट करे जहाँ को कि कनेक्शन बोली कहा जाए आउ से कनेक्शन कौन करे ना इट हेल्प्स द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास डायरेक्टली बिटवीन द सेल प्रोटीन ने थिबा स्मॉल मॉलिक्यूल्स को से कौन करिवो ना इजीली पास करिबारे हेल्प करे ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पचारुची approximately how long after fertilization does implantation of an embryo usually occur केते दिन परे फर्टिलाइजेशन रो इम्प्लांटेशन हुए ता मने रखिबो अबाउट 6 days क्वेश्चन नंबर 5 which bone cells are bone building cell bone building cell होची तुमरो osteoblast osteoclast कौन करे ना ये ब्रेकडाउन बोन ब्रेकडाउन सेल रेस्ट रहीगला osteocytes and those osteocytes are the tapering and star shaped cell that are present inside the matrix and maintain bone health and any mechanical pressure okay जिबा क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 पचारची the supporting cells in the nerve tissues are supporting cell होची कोन ना तुम्हें यादरू एलिमिनेशन करि परिबो कि फास्ट तुमरो मेजेनकाइम एंड कैथेरिन तो हबो ही नहीं कैथेरिन तुमरो सेल जंक्शन रे रहिची तो नर्वस टिश्यू रे रहिबोनी मेजेनकाइम भी रहिबोनी न्यूरॉन होची कोन ना इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इंपल्स कंडक्शन ओके नर्व इंपल्स कंडक्शन तो ये भी हबनी नेक्स्ट रहउची न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया ही होची करेक्ट आंसर आउ मने रखिथिबो न्यूरोग्लिया is known as the supporting cell and it helps in support protection and nourishment to the neuron नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 पचारची ए स्प्रिंटर वुड एक्सपीरियंस मसल फैटिक सूनर देन ए मैराथन रनर ड्यू टू गोटे स्प्रिंटर कौन करे ना से बहुत फास्ट रन करे आ गोटे मैराथन रनर कौन से लॉन्ग डिस्टेंस को रन करे एतिकी आमे जानिचे कौन पाइका गोटे स्प्रिंटर सी कौन करछि ना मसल फैटिक से फास्ट सी फील करि पारे इन कंपैरिजन टू गोटे मैराथन रनर एक्चुअली एटार करेक्ट आंसर होची कौन ना एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इन द मसल्स ऑफ स्प्रिंटर तुमरो स्प्रिंटर मसल्स रे कौन हुए ना एनारोबिक मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हुए सेति पई से कौन करे ना ता बॉडी रे स्टोरेज ग्लूकोज रो अमाउंट कमी जाए सेति पई कौन हुए ना सी इजीली ताकू कौन लगे ना फैटिक फील करे नहले भी यार आउ गोटे भी ऑप्शन जदि एमती थांता ग्लाइकोलाइसिस इन द मसल्स ऑफ स्प्रिंटर जदि थांता ताहले भी ठीक ही थांता बट एठी लिखि देछि डी रे कोन दे देछि ना मैराथन रनर दे देछि हैला एठी ग्लाइकोलाइसिस ता तुमरो फास्ट होछि कोठी ना तुमरो स्प्रिंटर मसल्स रे ओके आउ ग्लाइकोलाइसिस हेले कोन हुए ना दैट
leads to rapid build up of lactic acid and quick fatigue in compared to aerobic endurance. Okay, then aerobic metabolism in the muscles of sprinter. Aerobic metabolism हुएनी, anaerobic metabolism in the muscles of marathon runner. हाँ यहाँ ठीक अच्छी, किंतु आमर क्वेश्चन अनुसार फास्ट आमर कौन होची ना anaerobic metabolism टा होची कोठी ना फास्ट होची आमर मसल्स ऑफ स्प्रिंटर रे. ओके, जीवा क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 पचारची कोरालोइड flagellated cells that cover large part of the inner chamber of sponges helping water circulation to continue. ये क्वेश्चन टा रिपीट होइची. आमे जो क्वेश्चन डिस्कस करछे ता धेरे ए क्वेश्चन आसीथिला. मु कहितिले कि फ्लैजेलेटेड सेल रहिची. फ्लैजेलेटेड सेल को हमर क्वानोसाइट्स कहा जाए. आ क्वानोसाइट्स होची स्पंज रो इनर लेयर, तर आउटर लेयर को कोन कहा जाए ना पिनाकोसाइट्स कहा जाए. हैला आउ दोज आर द थिक एंड प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, आ क्वानोसाइट्स को थिरे तुमरो हेल्प करे ना तुमरो फीडिंग, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन रे. ओके, ताले करेक्ट आंसर होची तुमरो क्वानोसाइट्स. क्वेश्चन नंबर 9. The coral species that build reef are known as. को कोराल स्पेसीस हमरो रीफ बिल्ड करती ना हर्माटाइफिक. एटा डायरेक्ट क्वेश्चन. डिटेल जदि तुम कोराल रीफ पढ़ी थो कोराल एंड कोराल रीफ ताहले ए क्वेश्चन रा आंसर दे परिबो. आ मन रखि कोराल कोराल रीफ माने निडारियार को क्लास अंडर रे जाउचंती ना आंथोजोआ. हैला आउ ए माने को स्टेज टा शो करती ना पॉलिप. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन देला कौन ना रैबिडिटीज आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द एपिडर्मिस इन. आंसर होची तुमरो टर्बेलारिया बिकॉज तुमरो रैबिडिटीज दोज आर द रोड लाइक structure that are found in the epidermal cell of most living flatworm बा जोटा को हमर टर्बेलारिया भी कहा जाए. and they secrete to form a protective mucus. से माने कौन करते ना गोटे प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रेट करते. जीवा क्वेश्चन नंबर 11. 11 कहूची द सिंसिटियल एपिडर्मिस. सिंसिटियल माने प्रेजेंस ऑफ मेनी न्यूक्लियस. ओके, सो सिंसिटियल एपिडर्मिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. सिंसिटियल न्यूक्लियस होची कहार कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ना राउंड वन लाइक तुमरो एठी राउंड वन रे आंसर देछि कि में ना हला तुमरो एस्कारिस. देन बायोडाइवर्सिटी इज observed to increase towards equator, decrease towards equator, remain unchanged and fluctuate drastically along latitude. No, जिते बेलू आम पोल रिजियन रु आम जिते इक्वेटर रिजियन को आसू से टाइम रे आमर नंबर ऑफ स्पेसीज इनक्रीज हुए. कहीं ना पोलार रिजियन रे कौन ना सेठी कौन ना एते हेवी आइस आउ से क्लाइमेट रे कौन हुए ना भेराइटी बा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा जाई पारंतिनी. कहीं ना से एनवायरनमेंट रे समस्त तिष्टि पारंतिनी. बट इक्वेटर आड़ को आम जमती आसवा पोल जमती इक्वेटर आड़ को आसुचे सेते बेलू माने मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म मानक पई एनवायरनमेंट कौन हुए ना सुइटेबल हे आसे. तो आंसर करेक्ट हबो मूविंग फ्रॉम पोलर रिजियन टू इक्वेटर. ओके, ताहले बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व टू इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर.
इक्वेटर आड़ को डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज बा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज। ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी तुमरो मु डिस्कस करी इकोलॉजी क्वेश्चन जिते बड़े डिस्कस करची आर एंड के सिलेक्टेड स्पेसीज कौन से विषय मु कही है मन पड़ी मु कही जिते बेलू तुमको एस सेप बा सिग्मॉइड ग्रोथ कथा कही से बेलू के स्पेसीज कथा कही एंड कही कि अपोजिटा हूँ आर स्पेसीज आर स्पेसीजटा तुमरो को ग्रोथ कर्व शो करती ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को शो करती। ओके ताहले आर्ट स्पेसीज कौन ना आर्ट स्पेसीज कौन ना जोड़ाक स्मॉल इन साइज होइथिबे आउ सेमानकर नंबरटा ह्यूज होइथिबो आउ सेमानकर मोर्टालिटी रेट भी सेमानकर हाई होइथाय। एतिकी होउचे तार बेसिक कांसेप्ट आर्ट सिलेक्टेड स्पेसीज। ताहले देखिबा एई ऑप्शन भितर कोटा देइची ऑप्शन नंबर ए देइची स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज नहीं नंबर ऑफ प्रोजेनी सब बेले हाई हुए तो फर्स्ट ऑप्शन भूल देला। सेकेंड नंबर को जिबा स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ लार्ज साइज साइज ताकर लार्ज जमा हुएनी कि सेमानकर प्रोजेनी भी स्मॉल केबे हुएनी। थर्ड टा देला लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज थर्ड टा ठीक देइची। फोर्थ देइची लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड विथ लार्ज साइज साइजटा लार्ज हुएनी। ओके तो ऑप्शन नंबर डी भी भूल अच्छी ताले ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 आमे पढ़ी डिस्कस करथिले सिमन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स आउटे आसिला कौन ना शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स है। तो शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स से कौन कही ना ही टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ स्पेसीज लिविंग इन ए हैबिटेट एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये स्पेसीज रो कौन ना हैबिटेट आउ तार रिलेटिव अबंडेंस उपरे से स्टडी करथिले। ओके ताहले फर्स्ट ऑप्शन टा कौन होउची ना करेक्ट आसुची नाइ स्पेसीज इवेननेस आउ रिचनेस ए दुटा स्टडी करथिले सिमन। ओके तला ए एंड बी ये भी भूल देला। नंबर ऑफ स्पेसीज इन ए लिविंग हैबिटेट एतिकी जाई ठीक देला एंड इट्स रिलेटिव अबंडेंस है से अबंडेंस उपरे लिविंग स्पेसीज रा हैबिटेट एंड अबंडेंस उपरे से रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करथिले एंड ता उपरे से डॉक्यूमेंट्स देथिले। ओके स्टडी करथिले तो ये अधा देइची तो एटा भी भूल हबो। देन क्वेश्चन नंबर 15 लेक्टिन्स आर प्रोटीन स्पेसिफिक टू अच्छा आमे लेक्टिन कथा भी पढ़ी थिलु those are the protein that are specific to sugar. Lectins are defined as proteins that binds to carbohydrate है तो ये जो लेक्टिन माने कोथरे हाई अमाउंट रे रही थांती ना तुमरो जो किडनी बीन रही पीनट सोयाबीन टमाटो पोटाटो लेंटिल्स ये सब थिरे माने हाई अमाउंट रे रही थांती। सो कुकिंग सोकिंग एंड फर्मेंटिंग significantly reduce lectin activity and making these nutritious food safe to eat है ताले लेक्टिन कौन करे ना लेक्टिन किछिटा अमाउंट रे आम पाइका डेंजरियस बिकॉज लेक्टिन्स यूज टू डिफरेंट प्लांट इन नेचर मे कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग ह्यूमन डाइजेशन है। ह्यूमन डाइजेशन ने से प्रॉब्लम करके कौन करछि ना प्लांट को डिफाइन करछि कि रिसिस्ट करने को बा एग्जिस्ट करने को आमर नेचर रे आउ कौन करछि ना दे रिसिस्ट बीइंग ब्रोकन डाउन इन द गट एंड आर स्टेबल इन एसिडिक एनवायरनमेंट से माने गट रे कौन होउछि ना इजीली डाइजेस्ट होउनी है सेमतिया रिसिस्ट हे के रहउछि आउ कौन ना से
ब्रोक डाउन इजिली हो पारे आउ स्टेबल के थाए ना तुमर एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे रही थाए आउ से जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट कौन करे ना दैट प्रोटेक्ट लेक्टिन कंटेनिंग प्लांट इन नेचर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ये डीएनए रिपेयर ऊपर क्वेश्चन देची एरर फ्री रिपेयर डबल स्टैंडर्ड ब्रेकडाउन इन डीएनए अकर्स बाय एटा डायरेक्ट क्वेश्चन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में कौन हुए ना एरर फ्री रिपेयर हुए आउ डबल स्ट्रैंड ब्रेक रे को रिपेयर हुए ओके तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी जीवा क्वेश्चन नंबर 17 in eukaryotes mismatch repair mechanism is initiated by mismatch repair टा हमर इनिशिएटेड होची कोठी ना स्ट्रैंड स्पेसिफिक निक रु हमर स्टार्ट हुए mismatch repair ओके क्वेश्चन नंबर 18 the molecular basis of mn blood group system in human is mn ब्लड ग्रुपटा आमर ह्यूमन रे भेरी करे कौन ना अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन रे देखिबा कोथिरे देइची ना फर्स्ट ऑप्शन रे देइची क्वेश्चन नंबर 19 को जीवा बेस्ड ऑन द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज डिफरेंस कम्युनिटी provided below indicate which of the statement is true चारटा स्पेसीज देइछि कम्युनिटी रे कोटा ट्रू देइछि ओके फर्स्ट देला कम्युनिटी 1 हैज हाईएस्ट डाइवर्सिटी ना कम्युनिटी 1 रो हाईएस्ट डाइवर्सिटी हबनी कहीं ना डाइवर्सिटी कौन द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी ओके ताले ईच कम्युनिटी रे हमर 4 टाइप्स रो स्पीशीज अछि हैला ताले कम्युनिटी 1 रो हाईएस्ट डाइवर्सिटी केमती होबो एटा फॉल्स होबो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन all 4 community have same diversity all community रो same diversity भी हबनी or have 4 types diversity but same diversity हबनी then diversity of community 2 more than community 3 community 1 and community 4 community 2 टा तुमरा लार्जेस्ट स्पेसीज इवेननेस माने कौन ना इक्वाली ईच डाइवर्सिटी रे कौन होची सॉरी इक्वाली ईच स्पेसीज रे तुमरो इंडिविजुअल गुड़ाक डिवाइड होगी रही ओके ताले कम्युनिटी 2 टा होची हमरो हाईएस्ट इन डाइवर्सिटी ओके कम्युनिटी 2 टा ओके ताले ऑप्शन सी और डी देची ठीक देची then community 3 को जीवा community 2 and 3 they have highest diversity ताहले 2 equal to 3 हबो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हबो then community 1 then community 4 1 equal to community 4 कहीं कि ना 1 और 4 रे गोटे स्पेसीज रे कोन हाईएस्ट तुम रिच डाइवर्सिटी रही
आउ रेस्ट तीन टारे तुमर इक्वाल डाइवर्सिटी रही। ओके देन जीवा ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 अलाउ पोचिंग एटा तो पूरा भूल हम जेहेतु अलाउ पोचिंग गोटे ऑप्शन भूल हो गला ताले ऑल ऑफ द अबव भी भूल हो प्रिवेंट ट्रेड्स एंड रही प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्शन का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही तुमरा पब्लिश करागला। ओके क्वेश्चन नंबर 21 आरिबाडा रिफर्स टू आरिबाडा होची कौन इट इज ए मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स। ओके मन रखिथिबो ए टर्मटा आरिबाडा ओलिव रिडल टर्टल मानकर गोटे नेस्टिंग को कह जाए आरिबाडा। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 22 टू म्यूटेंट एनिमल्स विथ white eyes were crossed all F1 progeny had red eye when F1 was self it produced progeny with white and red eyes in ratio 9:7 that means in F2 okay on the basis of the information provided which of the following is correct the mutation in the parents are allelic the mutation in the parents are non-allelic mutation in the parents are linked none of the above এই রেসিওটা আসুচি তোমার কোণ না কমপ্লিমেন্টেশন পাইকা হচ্ছে সো করেক্ট आंसर হব মিউটেশন ইন দ প্যারেন্টস আর নন আলেলিক। antigen antibody reactions detected by precipitate formation on the agar gel is एरा होचे इम्यूनोडिफ्यूजन एसे इम्यूनोडिफ्यूजन एसे रे कौन होचे ना तुमर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को तुम्हें डिटेक्ट करबा पई का कौन करछो ना अगर जेल फॉर्मेशन हुए। ओके In question number 24, the reaction that lead to the formation of amino acid from TCA cycle intermediates are TCA cycle ला intermediate रे जो थिरे कि हमरा amino acid formation को जे lead करचे ताकू कौन कहा जाए ना हमरा transamination बोली कहा जाए intermediate बोली देची अब amino acid formation को promote करोजी। Then question number 25 match the columns रे receptor tyrosine kinase cyclic GMP GAP nuclear receptor एठी देची inactivation of G protein reception of insulin signal thyroid hormone and receptor of guanylyl cyclase। आमे जानिचु कि CGMP होची कोन ना रिसेप्टर ऑफ गुआनाइल साइक्लेज ताले एन टा हमर फोर्थ सहित मैच करिवो ताले ऑप्शन ए और बी रे एन
फोर्थ सहित मैच करुची ओके देन आउ देखिबा ताले आउ हमको कोटा आसुची आमे जानिचे रिसेप्टर ऑफ टायरोसिन काइनेज होची किए ना रिसेप्शन ऑफ इंसुलिन सिग्नल हैला ताले एम टा तुमरो मैच करची 2 सहित ए आउ बी रे M2 N4 देची ताले हमें करेक्ट बाहर करिबा ओ आउ पी ऊपर ओके गैप हमें जानिचो गैप रो काम कोन ना से थायराइड हार्मोन सहित रिलेटेड रही थाए ओके देन सॉरी गैप रो काम होची कोन ना इनएक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन को इनएक्टिव करूची किए ना तुमरो गैप देन न्यूक्लियर रिसेप्टर किए ना तुमरो थायराइड हार्मोन ताहले करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 26 meth hemoglobinemia is caused by the drinking of water contaminated with nitrate contamination हेले वाटर रे तुमरो मेथ हेमोग्लोबिनोमिया डिजीज होता है काई स्क्वायर टेस्ट तुमरो प्राय टाइम आसुची तो बी केयरफुल काई स्क्वायर टेस्ट रो क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस करके गले मे बी क्वेश्चन एथर को भी आसी पारे तो क्वेश्चन देछि इन ए काई स्क्वायर टेस्ट व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए कंटीजेंसी table consisting of 4 row in variable 1 and 2 column in variable 2 ताहले हमर एटा केमती आंसर बाहरिबो ना 0 r-1 into column -1 ହେଲା 3-1 2-1 2 into 1 2 question number 28 when ligand gated ion channels open ions move through these channels under the influence of the जेतबेले ion gated सॉरी जितेबले लाइगेंड गेटेड आयन चैनल ओपन हुए से को आयन कौन करे ना मूव करे चैनल देकी सेटा कहा इन्फ्लुएंस रे सेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल केमतिया हुए ना तुमरो इन्फ्लुएंस रे तुमरो इलेक्ट्रिक फील्ड रे हुए हैला ताले आंसर होची कोन ना कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल देन क्वेश्चन नंबर 29 न्यूरल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंटली वर्क्स via second messenger that activate that's dependent kinase to phosphorylate a protein प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन पाइका तुमरो को काइनेसटा तुमरो दरकार ना जी प्रोटीन डिपेंडेंट काइनेसटा तुमरो दरकार नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 30 stem cells that can differentiated into all cell lineage that is stem cell हमरो आमे ताको कोन कहूचे ना स्टेम सेल टा हमरो एनी सेल को कोन करिवो ना डिफरेंशिएटेड हेई पारे ओके सेथ लागि ता एटार करेक्ट आंसर होची एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कौन करे ना इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ऑल सेल लाइनेज क्वेश्चन नंबर 31
In regard to the cross bridge power stroke, which one is true? क्रॉस ब्रिज पावर स्ट्रोक माने तुमरो मसल कंट्राक्शन एंड रिलैक्सेशन रो आसी ए टाइप रो क्वेश्चन भी तुमरो सीयूईटी रे थरे आसीथिला हैला। देखिबो तुमरो जतबेले कंट्रैक्ट हुए सेतबेले को टुवर्ड सेंटर रे हुए से लगी कंट्राक्शन टाक सब बेले कॉन्सेंट्रिक कंट्राक्शन बोली कह जाए आ कौथिरे भी कॉन्सेंट्रिक कंट्राक्शन नहीं। ओके देन इन कॉन्सेंट्रिक कंट्राक्शन द क्रॉस ब्रिज पावर स्ट्रोक पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर कॉजिंग सार्कोमियर शॉर्टनिंग। फास्ट ठीक अच्छी कहीं ना तुमर सब बेले एक्टिन टाक कौन हुए ना एक्टिन को पुल करे किए ना तुमर पावर स्ट्रोक है। बी रे देछि कौन ना पुश द एक्टिन एक्टिन टा पुश हुए नहीं एक्टिन टा सब बेले सेंटर आड़ को पुल होकि आसे तो भूल हम। लास्ट ऑल ऑफ द अबव देछि तो आखि बुझिकी भूल हम। थर्ड टारे देछि जो तुमर आइसोमेट्रिक कंट्राक्शन सेटा भूल अच्छी। ओके जेबा क्वेश्चन नंबर 32 को 32 रे देछि कोन ना वाइल्डर राइजिंग सॉरी वाइल्डर रिंग इज ए वाइल्डर रिंग कोन ना इट इज योर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। एटा तमे डीएससी रे पढिबो इम्यूनोलॉजी जो मानकर इम्यूनोलॉजी चैप्टर रहिबो। एंड ये जो वाइल्डर रिंग टा ना ये तुमरो कोठी अच्छी ना फैरिंग्स रे अच्छी फैरिंग्स रे अच्छी माने तुमरो जो ओरोफैरिंग्स आउ तुमरो ये जो नेजोफैरिंग से मझा मझी एरिया रे ये तुमरो रहूची। ओके देन या को रिलेटेड एटा इन्फेक्शन हेले तुमरो को डिजीज हुए ना टॉन्सिल हुए मन रखी था। वाइल्डर रीजन इन्फेक्शन ने तुमरो कौन हुए ना टॉन्सिल हुए। आउ गोटे तुमर हुए कौन ना एडेनोइडाइटिस। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइलोजेनेटिकली द ओल्डेस्ट एंटीबॉडी होची तुमर आईजीएम। ताकू आमर ओल्डेस्ट एंटीबॉडी बोली कह जाए कहीं ना ये आमर फास्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट को पाखरे ये आमर डिटेक्ट होइथिला। सेतलागी याको फाइलोजेनेटिकली द ओल्डेस्ट एंटीबॉडी बोली कह जाए। ओके देन जीवा क्वेश्चन नंबर 34 पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट और ग्रुप ऑफ क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय एमएससी बा तुमरो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी सेल्स। ओके तो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी आपको आमर बेसिकली कौन कह जाए ना मॉलिक्यूलर सर्वाइवलेंस सिस्टम बोली कह जाए। एंड ये कौन करे ना बाइंडिंग पेप्टाइड fragment or antigen derived from pathogen and displaying them on the other cell surface for recognition by the T cell। ओके तो T cell को recognize करवा पाइंका ये कौन करे ना तुम्हारा एंटीजन ये कोथिरो तुम्हारा पैथोजेन ठारू डिराइव हुए आउ सेल सरफेस रे ये कौन करे ना T सेल को तुम्हारा रिकॉग्नाइज करे हैला। आ तुमर जो एमएससी क्लास 2 जो रही तार बेसिकली सी कौन करे ना तुमर ताधरे को टाइप रो सेल रही ना हेल्पर टी सेल रही आ काम कौन ना इट एक्टिव हेल्पर टी सेल टू रेगुलेट इम्यूनो सिस्टम। ओके बा इम्यूनो रेस्पॉन्स को सी कौन करे ना रेगुलेट करिया पाइंका सी एक्टिव करे काहाकू ना तुमर हेल्पर टी सेल को।
तो ये क्वेश्चन देछि पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप्ड और ग्रुप ऑफ क्लास 2 MSC molecule is formed by alpha 1 and beta 1 domain. Okay. Next question jiba. The decrease in response to repeated or continuous stimulation is known as habituation. ये तुम्हारा एनिमल बिहेवियर रु आसी जदि तुमर कंटिन्यूअस बा रिपीटेड स्टिमुलस जदि दिया जाउची ताहले कोन होउची ना तुमर रेस्पॉन्स टा डिक्रीज करे आ याकू तुमर हैबिटुएशन बोली कहा जाए। इम्प्रिंटिंग माने कोन ना जोटा तुमर फ्रॉम भेरी चाइल्डहुड रो जोटा तुम माइंड रे फिक्स हो जाइए सेटा को तुमर इम्प्रिंटिंग बोली कहा जाए। माने सपोज गोटे बिलेई छुआटा को जदि आनिकी आम माने पालिबा गोटे मनीष जदि पालिबो आ किछि वर्ष पर जदि ता माँ आसीबो ताहले ता माइंड रे रहिबो कोन ना ई मनीषटा ही मोर माँ। ओके दैट इज सेटा को आमे कोन कहिबा ना इम्प्रिंटिंग बोली कहिबा। आउ इंस्टेंट कोन ना जोटा होची हमर फ्रॉम बर्थ थ्रू जोटा आम सहित आसी थाए जो किसी बिहेवियर आमर माने बर्थ थ्रू ही आम सहित आसी थाए आमर जेनेटिकली हो ताकू आमे कोन कहबो ना इंस्टेंट बोली कहबो। आई होप आज क्लास तुमको हेल्प करिवो तुमरो कमिंग सीपेट एग्जाम रे। सो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिवो एंड माइंड को कूल रखिकी एग्जाम फेस करिवो। ऑल द बेस्ट। पुणी नेक्स्ट सेशन रे रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करिबा।